बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 58 है टोफल सीरीज फॉर द बिगनर्स का। आज हम इसमें रिलेटिव क्लॉसेस को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो रिलेटिव क्लॉजेस में बेसिकली रिलेटिव क्लॉज इज यूज्ड टू फॉर्म वन सेंटेंस फ्रॉम टू सेपरेट सेंटेंसेस। जब आपके पास दो डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं तो आप उससे रिलेटिव क्लॉज को फॉर्म करते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन रिप्लेसेस वन ऑफ द टू आइडेंटिकल नाउन फ्रेजेस एंड रिलेट्स द क्लॉजेस टू ईच अदर। और हाउ टू कनेक्ट द टू क्लॉजेस टुगेदर कि आप उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए उसको आइडेंटिकल नाउन फ्रेजेस को उससे शो करके दो जो आपके क्लॉजेस हैं उनको आपस में एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड their uses आर लिस्टेड हियर। दिस आपको जो टेबल लिस्ट नज़र आ रही है ऑन योर लेफ्ट, इसमें आपके पास प्रोनाउन है जो कि हम फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं, और इसमें आपको ये रिलेटिव प्रोनाउंस की लिस्ट है। सो स्टार्ट्स विद दैट। और आपके पास यूज़ नॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है इट्स फॉर थिंग्स, विच हम यूज़ करते हैं अगैन फॉर थिंग्स, हु हम यूज़ करते हैं पीपल के लिए। अगैन ये आपके सब रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम किन के लिए रेफ़र करते हैं, ये आपके पास रेड में शोन है। हुम को भी हम पीपल को रेफ़र करने के लिए शो करते हैं और हुज़ को हम यूजुअली पीपल को ही रेफ़र करने के लिए शो करते हैं। सो दीज आर सम रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये वो चीज़ें हैं फॉर्मल राइटिंग इंग्लिश में जिनको हम रेफ़र करने के लिए इन प्रोनाउंस का सहारा लेते हैं। अगैन आपकी क्लैरिटी के लिए रिलेटिव क्लॉज हम तब कंस्ट्रक्ट करते हैं जब हम दो डिफरेंट सेपरेट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए हम उनमें जो आइडेंटिकल नाउन फ्रेज होता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन से शो करके दोनों रिलेटिव क्लॉजेस को कनेक्ट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये वो चीज़ें हैं या वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इन रिलेटिव प्रोनाउन से रेफ़र करते हैं या इंडिकेट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए है वो ये है कि इन स्पीकिंग दैट कैन बी यूज फॉर पीपल बट नॉट इन द फॉर्मल राइटिंग इंग्लिश। इससे पहले हमने लिस्ट में देख लिया, बट आप रिमेंबर कि दैट का वर्ड हम इन फॉर पीपल हम यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ स्पोकन इंग्लिश। बट विद रिगार्ड्स टू द राइटिंग इंग्लिश, फॉर्मल राइटिंग इंग्लिश में आप कभी भी दैट को लोगों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट इज़ ओनली मेंट टू रेफ़र टू थिंग्स और इनएनिमेट जिसे हम कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी और डिटेल देखते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन कम्प्लीटली रिप्लेसेस अ डुप्लीकेट नाउन फ्रेज। तो आपके पास जो डुप्लीकेशन होती है नाउन फ्रेजेस की उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद दीज रिलेटिव प्रोनाउंस। इसकी मोर क्लैरिटी आपको होगी जब हम क्वेश्चंस एग्जाम्पल से समझेंगे। देयर कैन बी नो रेगुलर प्रोनाउन अलॉन्ग विद द रिलेटिव प्रोनाउन। आप एक किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई रेगुलर प्रोनाउन कभी भी दोनों को एक जगह पे गैदर नहीं कर सकते। देयर कैन नेवर बी नो रेगुलर They can never be a regular pronoun along with the relative pronoun. You can't gather the regular pronoun along with the relative one. You can use either. So ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि relative pronoun is actually is a complete replacement of your duplicate noun phrase. So आप you can't have two things together. For example, अगर हम इसमें हम कहें कि this is the book that I bought इट एट द बुक स्टोर। ना हम दैट से बता चुके हैं दैट वी आर रिफरिंग टू अ बुक, तो उसके बाद फिर हम दोबारा इट नहीं कह सकते बिकॉज हमने मेंशन कर दिया दैट के वी आर रिफरिंग टू बुक। सो इसका करेक्ट फॉर्म होगा कि दिस इज द बुक दैट आई बॉट एट द बुक स्टोर। जब आपने आई बॉट एट द बुक स्टोर बता दिया तो इट मीन्स यू आर ऑलरेडी रिफरिंग विद द वर्ड दैट क्या यू आर रिफरिंग टू अ बुक। सो देयर इज नो रीजन टू यूज दिस वर्ड इट अगैन। So you can't have a regular pronoun in connection along with the relative pronoun together in one sentence. There should be a complete replacement of a regular pronoun from the relative pronoun. ये आपको clarity होनी चाहिए। इसको red से mark करने का मकसद ये है कि ये आपने it use करके इसको incorrect कर दिया because you have gathered the relative with the regular one. So you just show with one and yet the sentence make a lot of sense. आपके पास यहाँ पे आपने remember है कि आपके पास जो that a sentence with a relative clause can always be reduced to two separate sentences. So each sentence आपके पास should have its separate verb. जब आपके पास relative clause को आप दो separate sentences के अंदर reduce करेंगे तो bear in mind कि आपके पास every clause should have its own verb. For example, we bought the stereo. The stereo had been advertised at a reduced price. So ये दो different clauses थे। इसको हम relative clause construct करेंगे with replacement of one the common pronoun with a relative pronoun. So यहाँ पे common noun को हमने relative pronoun से replace किया. So we bought the stereo that had been advertised at a reduced price. तो यहाँ पे आपके पास दो verbs हैं ये दो different independent clause के, और that is actually referring to the stereo in the sentence. इसी तरीके से John bought a boat. The boat cost $30,000.
ये दो आपके पास क्लॉजेस हैं. आपका जो कॉमन नाउन है दिस इज बोट, सो आपने इस बोट को कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज दैट. सो द रिलेटिव क्लॉज विल लुक लाइक जॉन बॉट अ बोट that cost $30,000. Is that is actually referring to this common noun of the sentence, which is boat. Another example, George is going to buy the house. We have been thinking of buying the house. George is going to buy the house that we have been thinking of buying. So again, this that is actually referring to the house that was supposedly going to buy, which was already bought by George, and we were also planning to buy one. So आपने इस that को use किया है to indicate to refer towards house, and make sure कि that को हम हमेशा things को refer करने के लिए इस्तेमाल करेंगे in formal writing English. इसको हम कभी भी किसी इंसान को refer करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे. Another example, John is the man. We are going to recommend John for the job. John is the man, so it's a human. We are going to recommend John for the job. So to make a relative clause, John is the man whom we are going to recommend for the job. So now इसमें हमने word whom को इस्तेमाल किया है, which is referring actually to the noun John, and we connected the two clauses together. So John is the man whom we are going to recommend for the job. अब यहाँ पर आप that इस्तेमाल नहीं कर सकते, because in writing English, formal writing English में the word that cannot be referred to a human, it can only be used to refer to a thing. अब हमने relative clause को हमने introduction ले लिया. अब हम स्टडी करेंगे हम who और whom के बारे में. आप who को इस्तेमाल करेंगे when the noun phrase which is supposed to be replaced is at the subject position. अगर आपका noun phrase जिसको आपने replace करना है with a relative pronoun, वो अगर subject position पर है तो आप उसको who से replace करेंगे. However, अगर आपका जो noun phrase है जिसको आपने replace करना है वो आपके sentence में complement position पर था तो आप उसको whom से replace करेंगे. Important thing आपको जो notice करनी है वो ये कि जो आपका word whom है ये बहुत rarely इस्तेमाल होता है when it comes to a speech. However, when it comes to a formal writing English तो आप ने इस वर्ड को हमेशा इस्तेमाल करना है. इफ़ यू स्टिल हैव एम्बिग्विटी कि आपने हु और हुम के डिफरेंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आपके पास हु के साथ हमेशा वर्ब आएगा और हुम के साथ हमेशा नाउन आएगा. विद हु द वर्ब कम्स, एंड व्हेन इट कम्स टू हुम इट ऑलवेज कम्स विद नाउन. इन एग्जाम्पल्स को स्टडी हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं. Consider the following examples. The first example is the men are angry. And the second example is the men are in this room. The men are in this room. These sentences को हम इस तरह can be considered as the men are in this room are angry. हमारे पास दो example हमने sentences पढ़े, the men are angry and the men are in this room. So अगर हम इसको इस तरह बनाएंगे the men are in this room are angry. So the men is a subject. So how to make a relative clause? The men who are in this room are angry. The men who are in this room, this who is referring to the men again, are angry. Are in this room are angry. The men are angry. I don't like the men. Now these are two different clauses. The men are angry. I don't like the men. So the men, I don't like the men are angry. अब आप कह रही हैं the men whom I don't like are angry. So अब आपके पास ये जो men है they are at the complement position. I don't like the men because subject position पे you're talking about yourself. You are talking, so you are at the subject position. But जिस वक्त जिसके बारे में बात हो रही है वो the men है that you don't like, which are at the complement position. In that case आप इसको replace करेंगे with the word whom. The men whom I don't like are angry. So जब आपके पास जिसको आपने रिप्लेस करना है वो कॉम्प्लीमेंट पोजीशन पर है तो आप इसको whom रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करेंगे. और अगर आपने सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है विद द रिलेटिव प्रोनाउन तो देन द वर्ड who will come. So again the sentence, the subject replaced by who and the complement should replaced by the word whom. जो whom है इसके बाद आपको whom को word को आप preposition के बाद भी लिख सकते हैं. At times आपका जो word whom है that can also come after a preposition. In that case the preposition should always be moved to the position before whom in formal writing English. इसको example से समझते हैं. The men are angry. The woman is talking to the man. These are two independent clauses. So the woman is talking to the men are angry. The woman is talking to the men are angry. So to the is up the preposition है which is before the word whom it is whom. So आप इसको किस तरह से लिखेंगे? The men
टू whom the woman is talking is angry. So आपने इस preposition को अपने whom के साथ पहले place करना है, because यहाँ पर आपका जो ये जिसके बारे में बात है तो complement position पे, that's why आप इसको whom लिख रहे हैं, और उससे पहले preposition है. This preposition should also come before whom when you're making a relative clause and you're using the word whom. यहाँ पे whom इसलिए आ रहा है क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है वो complement position पर है और subject position पर आपकी woman, and you are not referring to to a woman, you're referring to the men a woman talking to. So since the men you're talking to is a complement position, इसलिए हमारे पास ये word whom आएगा. However, if the preposition is part of a combination such as a two-word verb, meaning that the preposition cannot be reasonably be moved away from the verb, it will remain with the verb. However, अगर आपके पास जो preposition है that is supposedly a part of a combination, which is यानी कि two word verb है, which means that the preposition cannot be reasonably be moved away from the verb, that will remain with the verb. यहाँ पर हमारे पास easily था, वो separated था, तो हमने इसको separate करके whom के साथ place कर दिया. लेकिन अगर आपका जो two word verb है और ऐसे में आप उसको replace नहीं कर सकते, तो आपने उसको that will be the preposition will remain with the verb. So ये आपको इसके बारे में clarity होनी चाहिए. whom को स्टडी किया. now the relative pronoun whose comes in. who हमको पता है कि जब हम यूज़ करते हैं जब हम रेफ़र कर रहे हैं समथिंग एट सब्जेक्ट पोजीशन. whom हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग समथिंग एट दी कॉम्प्लीमेंट पोजीशन, एंड व्हेन यू आर इंडिकेटिंग सम पोजेशन तो हम यूज़ whose को इस्तेमाल करेंगे. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. द बोर्ड वॉज कम्पोज ऑफ सिटीजन्स, द सिटीजन्स डेडिकेशन वॉज एविडेंट. सो इसकी रिलेटिव क्लॉज होगा द बोर्ड वॉज कम्पोज ऑफ citizens whose dedication was evident. So it's referring to the citizens' dedication. Second example is James. James' father is the president of the company, has received a promotion. So अब आप कैसे बताएंगे James, whose father is the president of the company, has received a promotion. So the word whose is referring to the that James' father. So आपने James' father में James को आपने noun को replace कर दिया with this relative noun which is whose, because आप यहाँ पे possession show करें तो it comes with the word whose. Another example is John found a cat. The cat's leg was broken. So we are talking about the leg of the cat. As the result, इसका relative clause बनेगा John found a cat whose leg was broken. Since we are talking about the leg of the cat, तो इसको हम replace कर देंगे और refer करेंगे with the word whose. For example, Harold. Harold's car was stolen last night. Is at the police station. So अब आप यहाँ पर इसका relative clause construct करेंगे. Harold whose car was stolen last night is at the police station. So instead of again repeat करें कि Harold car, you just mention the word whose and it's referring कि you're talking about Harold's car. Since it's about the possession, so you replace it with the word whose. Another example. The company's employees are on strike, is closing down for 2 weeks. So अब आप किस relative clause construct करेंगे. The company whose employees are on strike is closing down for 2 weeks. So it's about whose is referring to the employees of a company. So instead of mentioning the word a company again, you just replace it with the word whose, because we are talking about the employees about the company. So आपने पहले company mention कर दिया, आप दोबारा उसको मैं कंपनी मेंशन करने के बजाय आप सिर्फ whose मेंशन कर दें, तो इट इज़ शोइंग दैट द एम्प्लॉइज यू आर टॉकिंग अबाउट इज रेफरिंग टू द सेम कंपनी यू स्पोक इन द फर्स्ट क्लॉज. Furthermore, the dentist is with the child. The child's teeth are causing some problem. To make a relative clause, the dentist is with the child whose teeth are causing some problem. So it's about the teeth of a child. So आपने child को repeat करने के बजाय आपने इसको refer कर दिया with the word whose. Question. Next example is the president. The president's advisors have quit is giving a press conference. So to make a relative clause, the president whose advisors have quit is giving a press conference. So the word whose comes because you're referring to the advisors of a president. So president owns, it's about the advisors who are owned by the president. हमने relative clauses को हमने in depth study किया in detail. अब हम उसके exercise को study करते हैं ताकि हमें इस concept की further clarity मिल जाए. So without further ado, let's start the exercise. ये आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको रिलेटिव क्लॉज को अप्रोप्रिएटली प्लेस करना है. सो आप इस स्लाइड पे थोड़ी देर अपनी वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिया हुआ है जिसको आपने डिसाइड करना है कि आपने इसमें सब्जेक्ट को कंसिडर करके दैटली यूज़ करना है सब्जेक्ट पोजीशन को, या कॉम्प्लीमेंट पोजीशन में आपका क्वेश्चन है तो आपने उसको हूम मेंशन करके इसको प्लेस करना है. सो अकॉर्डिंगली आपने हर सेंटेंस को आंसर करना है और रिलेटिव क्लॉज क्रिएट करना है. ये फर्दर 7 क्वेश्चंस हैं. टू आंसर अगेन आपके पास इसमें ब्रैकेट में
जो है इसको आपने प्लेस करना है अकॉर्डिंगली. सो इफ़ यू आर डन विद दिस तो हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे और टू द आंसर्स. दोज हु आर डन विद द क्वेश्चंस बाय नाउ, हम उनके लिए आंसर्स को जंप इन करते हैं. सो द फर्स्ट question was the last record. Again उसके पास bracket में है the record was produced by this company became a good record. So we are talking about the record now. So the last record that which was produced by this company became a good record. So again we are referring to which because this is about something which is thing which is a record. So इसलिए हम इसको which से replace कर रहे हैं, which से demonstrate कर रहे हैं. So that two sentences made in a relative clause this way. Second question, checking accounts. The checking accounts require a minimum balance are very common now. So इसका आंसर है जो checking account that और इसको आप which भी लिख सकते हैं requires minimum balance are very common now. So again इसमें भी आप इसको which से replace कर सकते हैं because again you are referring to a thing. जैसे आप पहले question में भी आप that भी mention कर सकते हैं और which भी mention कर सकते हैं because you are just referring not to any human, it's just about a thing. The question number 3, to the professor, you spoke to the professor yesterday is not here today. Now अब इसको आप कैसे mention करेंगे? The professor to whom you spoke yesterday is not here today. So again since आप इसमें जिस प्रोफेसर की बात कर रहे हैं that is at the complement position, this is again आपके पास preposition मौजूद है तो आपने इसको to से mention किया with whom because you are referring to about a human and which is at the complement position. So about human at the complement position और इससे पहले preposition मौजूद है तो to whom you spoke yesterday is not here today. Question 4, John, again John's grades are the highest in the school has received a scholarship. अब आप मेंशन करेंगे John whose grades are the highest in the school has received a scholarship. Has received a scholarship. Again next question, Philip bought a camera. The camera has 3 lenses. So इसका relative clause you construct होगा the Philip bought a camera that और हम इसको which भी लिख सकते हैं which has 3 lenses. So that's how you made 2 sentences into one connecting with the relative clause. Again this is going to be a thing or that's why हम इसको that या which से refer करेंगे. Question 6, Frank is the man. We are going to nominate Frank for the office of treasurer. Frank is the man. We are going to nominate Frank for the office of treasurer. So the relative clause will be Frank is the man whom we are going to nominate for the office of treasurer. So since आपका जो Frank है is at complement position और आप इसको whom से replace कर रहे हैं, refer कर रहे हैं. Question 7 is the doctor is with the patient. The patient's leg was broken in an accident. So the doctor is with the patient whose leg was broken in an accident. Whose leg was broken in an accident. Question 8, Jane is the woman. Jane is going to China next year. So the answer, so the relative clause will be Jane is the woman who is going to China next year. Next year. Question 9, Jane wants a typewriter. The typewriter self-corrects. So the relative clause will be Jane wants a typewriter that or which self-corrects. So that or which is referring to the typewriter which is a thing. Question 10 is this book, I found the book last week, contains some useful information. So to make a relative clause, this book which I found last week contains some useful information. So this word which is referring to this book. Again, it's an inanimate, it's a thing, so you can refer, you can आप इसको point कर सकते हैं with the word which. Question 11 is Mr. Bryant. Mr. Bryant's team has lost the game. Looks very sad. So अब आप इसको कैसे mention करेंगे? तो Mr. Bryant whose team has lost game looks very sad. Question 12. James wrote an article. The article indicated that he disliked the president. So इसका relative clause है the James wrote an article that or which indicated that he disliked the president. Since हम यहाँ पे refer कर रहे हैं towards the like or dislike which is a thing, it's not referring to the president, it is referring to the dislike or like. Question 13, Question 12 here is James wrote an article. The article indicated that he disliked the president. So the relative clause will be James wrote an article that indicated that he disliked the president. Since here हम that or which इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि we are referring actually towards article. We are not referring towards the president. If it was president then हम who या whom mention करते depending कि हम यहाँ पे subject या complement position पर हैं. Since हम यहाँ पे article refer कर रहे हैं which is a thing, तो हम इसको that या which से refer कर सकते हैं.
Question 13 is the director of the program. The director graduated from Harvard University, is planning to retire next year. So the director of the program who graduated from Harvard University is planning to retire next year. Since यहाँ पर आपका जो director है, it's at the subject position, that's why हम इसको replace करें with the word who. Question 14, this is the book. I have been looking for this book all year. So the relative clause will be this book that or which I have been looking for all year. So that's how you refer, since you are pointing towards a book which is a thing, that's why you can replace it with, you can mention as at with the that or which, any of the two. Question 15 is William's brother is a lawyer, so wants to become a judge. William, whose brother is a lawyer, wants to become a judge. So that's how we completed our relative clause by now. If you like this video, subscribe, like and share with your friends and family. Thanks for watching.